चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 12th केमिस्ट्री। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम डिस्कशन करेंगे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द सेल कांस्टेंट इज। तो ये क्या होता है? एल अपॉन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीज इन इक्विवेलेंट conductivity of an electrolyte solution by dilution is due to increase in the degree of ionization of the electrolyte. If the specific conductivity and observed conductivity of solution are the same, then its cell constant will be 1. The unit of cell constant is, it is centimeter inverse. The unit of specific conductivity is, it is ohm inverse, centimeter inverse. Placing a layer of zinc on iron to protect it from corrosion is called galvanization. Saturated solution of KNO3 is used to make salt bridge because velocity of both is almost equal. Both ions in a cell which has zinc electrode and normal hydrogen electrode NHE, zinc electrode act as anode. If the salt bridge is removed from cells, then the voltage decreases to 0. The process of rusting of iron is known as corrosion. The value of standard potential of hydrogen electrode will be 0. Now, the type of question is fill in the blanks. Acetic acid is weak electrolyte. The conductivity of the electrolyte increases on increasing temperature. On increasing the dilution, the value of specific conductivity of the solution decreases. Conductivity decreases as the size of ion increases. The unit of resistivity is ohm centimeter. The primary cell cannot be recharged again. The device which converts chemical energy into electrical energy is called electrochemical cell. The amount of electric current which produces 1 gram equivalent of substance is called Faraday. Chemical properties remain unchanged in metallic conduction. The inverse of specific resistance is called conductivity. The conductivity of 1 cubic centimeter of conductor is called specific conductivity. The value of 1 Faraday electricity is 96500 coulomb. Rusting of iron is an example of corrosion reaction. The potential of standard hydrogen electrode is considered to be 0 volt. Rusting of iron is example of an electrochemical cell. Next question is answer in one word or one sentence. Give two examples of strong electrolytes. Strong electrolytes are HCl, NaOH, NaCl. Give two examples of weak electrolytes. CS3COH, S2CO3. What is the effect of temperature on electrolytic conductivity? Conductivity increases. What is the device called in which electrical energy is converted into chemical energy? It is electrolytic cell. What is the potential produced due to the redox reaction between the electrode of metal and its ion called electrode potential? What is the unit of potential difference? It is volt. Rechargeable cells are called secondary cells. Write the chemical formula of rust Fe2. The formula of rust is Fe2O3 into XH2O. What will be the reaction called in which oxidation and reduction happen simultaneously? Redox reaction. Write the formula of molar conductivity. It is lambda m equal to kappa into V. Now there is 2 marks of questions of electrochemistry. The first question is write the definition of electrochemical cell.
Such a system in which chemical energy is converted into electrical energy is called electrochemical cell or voltaic cell. What is electrolytic cell? The system in which electrical energy is converted into chemical energy is called electrolytic cell. What is electrode potential? The difference in potential between electrode and the electrolyte in an electrochemical cell is called electrode potential. What is strong electrolyte? Writes its two examples. Those electrolytes which get completely ionized in aqueous solution are called strong electrolytes, NaCl, KCl, NH4Cl, etc. What is called weak electrolyte? Write two examples. Those electrolytes which have very little ionization in aqueous solution and do not get completely ionized even on extreme dilution are called weak electrolytes. The examples are NH4OH, CS3COOH. Write Ohm's law. The electric current flowing in a solution is proportional to the potential difference applied between the two electrodes immersed in the solution, that is V proportional to I. And if we remove proportionality sign, there is a constant R, V equal to Ri, where is R is the constant which is known as resistance of the conductor, I is the strength of current, and V is the potential difference. What is cell constant? The ratio of distance between electrodes to the cross-sectional area of any one electrode is a cell constant, which is called cell constant. The formula is x equal to L upon A. L means distance between the electrodes and A means the cross-sectional area of an electrode. Unit of cell constant is centimeter inverse. What is electrochemical equivalent? The mass of the substance liberated on the electrode when electric current of 1 ampere is passed for 1 second is called electrochemical equivalent. What is electronic conductivity? On which factors does it depend? The flow of current in metals is due to free electrons, which is called electronic conductivity. It depends on the following factors: nature and the structure of the metal, number of valence electrons per atom, decreases on increasing temperature. What is ionic conductivity? On which factors does it depend? The flow of current due to free ions in electrolytic solution is called ionic conductivity. It depends on the following factors: nature of electrolyte, number of ions dissociated, increases on increasing temperature, nature of solvent, and concentration of solute particles. Next question is, why does the conductivity of solution decreases with dilution? Because number of ions per centimeter cube decreases. What is salt bridge? Write its two functions. U-shaped tube filled with KCl or KNO3 in agar-agar solution is known as salt bridge. It connects two half cells. Functions: it allows the flow of current by completing the circuit. It maintains the electrical neutrality of the solutions. Write difference between metallic conduction and electrolytic conduction, and I have write this difference in pointwise. You can also write in tables. First of all, metallic conduction takes place by the movement of electrons. Electrolytic conduction takes place by the movement of ions. There is no chemical change. Due to chemical change, decomposition of electrolyte takes place. There is no transfer of matter. Transfer of matter takes place as ions. In metallic conduction, conductivity decreases with increase in temperature, increases with increase in temperature in electrolytic conduction. What is equivalent conductance? Conductance of total ion produced by 1 gram equivalent of electrolyte in the solution is called equivalent conductance. It is denoted by lambda eq, and the formula is lambda equivalent equal to K kappa into V. Next is, what is molar conductance? There is same definition, only the change is here is gram equivalent and here is gram mole. Thus, the definition is
Conductance of total ion produced by 1 gram mole of electrolyte in the solution is called equivalent conductance. It is denoted by lambda m, and its formula is lambda m equal to kappa into V. The next question is differentiate between electrochemical cell, that is galvanic cell, and electrolytic cell. I have written it in pointwise, you can write it in tables. It is a device to convert chemical energy into electrical energy. These points are for electrochemical cell. It consists of two electrodes in different compartments joined by salt bridge. Redox reactions occurring in the cell are spontaneous. Free energy decreases with the operation of cell, that is delta Z is less than 0. Useful work is obtained from the cell. Anode works as negative and cathode works as a positive electrode. Electrons released by the oxidation process at anode go into the external circuit and pass to the cathode. To set up this cell, a salt bridge or porous pot is used. Here is the corresponding points for electrolytic cell. It is devised to convert electrical energy into chemical energy. Both the electrons are in same solution. Redox reactions occurring in cell are non-spontaneous. Free energy increases with operation of cell, that is delta Z is greater than 0. Work is done on the system. Anode is positive and cathode is negative. Electrons enter into cathode electrode from external source and leave the cell at anode. No salt bridge is used in this cell. Now the question, what is standard hydrogen electrode SHE? How it is prepared? This consists of hydrogen gas at 1 atmospheric pressure bubbling over a platinum electrode immersed in 1 molecular 1 molality HCl at 25 degrees Celsius, that is 298 Kelvin as shown in figure. The platinum electrode is coated with the platinum black to increase its surface. The hydrogen electrode thus constructed form a half cell, which on coupling with any other half cell begins to work on the principle of oxidation and reduction. Electrode, depending upon the circumstances, work both as a node or cathode. This is the figure, and this is a hydrogen gas flowing in a glass tube, and this is a platinized platinum electrode, and the solution is 1 molar solution of hydrogen ion, and the atmospheric pressure gas the atmospheric pressure of hydrogen gas is 1 atm. Now the cell reactions are: cell reaction of standard hydrogen electrode SHE, when it acts as anode, that is H2Z changes into 2H2 plus ion and it gives 2 electron. It is represented as H2Z 1 atm Pt H3O plus 3O plus aqueous in 1 molar solution. When it acts as cathode, the cell reaction is reversed to it. This reaction is written as this part is written here and this part is written here. इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज, अब इसका भी हम यहाँ पर क्या कर देंगे उल्टा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज आर्बिट्रेरली असाइन टू पोटेंशियल ऑफ 0. Derive Nernst equation for single electrode potential. Value of standard electrode potential given in electrochemical series is applicable only when the concentration of electrolyte is 1 molar and temperature is 298 Kelvin. But in electrochemical cells, the concentration of electrolyte is not definite and the electrode potential depends on concentration and temperature. In such conditions, single electrode potential can be expressed by the Nernst equation. For a reduction half reaction, Nernst equation can be expressed as follows. तो यहाँ देखिए रिडक्शन में जो नर्नस्ट इक्वेशन है इस तरह से ई रिडक्शन, और यहाँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ये रिडक्शन है आर टी एन एफ, ये नेचुरल लॉग है एल एन, रिड्यूस्ड स्पीसीज है और यहाँ पर ऑक्सीडाइज स्पीसीज है.
फॉर जनरल रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रेट, यहाँ पर ये हमारे पास ये है Mn+ है और Ne ये इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये M कन्वर्ट कर लेता है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसी रिएक्शन को यहाँ पर E लिख दिए, यहाँ पर ये E0 लिख दिए, यहाँ RT है RT लिख दिए, NF है NF लिख दिए। यहाँ पर जो है मेटल बन रहा है, मेटल का जो मोलर कंसंट्रेशन होगा सॉलिड फॉर्म का 1 होता है तो 1 लिख देंगे। और यहाँ पर जो ये जो कन्वर्ट हो रहा है Mn+ तो Mn+ लिख देंगे। ये ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज यहाँ पर हमको लिखना है। इसके बाद अगले स्टेप में हम देखते हैं कि ये इस वाले टर्म को हम यहाँ ऊपर कर देंगे तो ये वाला जो साइन है ये प्लस बना देना है। अभी हमारे पास ये जो Mn+ है ये नीचे है डिनोमिनेटर में, इसको जब हम न्यूमरेटर में लिखेंगे तो यहाँ पर ये जो माइनस का साइन है ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ये नेचुरल लॉग है तो नेचुरल लॉग को 10 बेस के लॉग में चेंज करेंगे। तो देखिए इसको हमने वैसे कॉपी कर दिया, इसको भी कॉपी कर दिया, प्लस का साइन भी कॉपी कर दिया। अब जब हम यहाँ पर ये लॉग को नेचुरल लॉग को 10 बेस लॉग में चेंज करते हैं तो 2.303 ये तो आएगा ही, RT पहले से था, NF है, ये सारा चीज़ है ही, इसको लिख दिए। अब यहाँ पर हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं तो देखिए इसको हम E ही लिख दिए, ये E0 ही लिख दिए। इसके बाद देखिए 2.303 आर की वैल्यू जो होती है ये 0.831 वगैरह होती है, और यहाँ टी की जो वैल्यू होती है 298 होती है, फैराडे की वैल्यू 96500 होती है। ये सारी वैल्यू को हम पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.059 और n log 10 बेस Mn+। इस तरह से ये सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए नर्नस्ट इक्वेशन होगा। यहाँ पर आप वैल्यू देख सकते हैं, ई का मतलब है रिडक्शन, ये इसका मतलब है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और ये जो E0 है ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। और यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए ज़रूरी होता है कि जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर हो और जो टेम्परेचर हो वो 298 केल्विन हो। यहाँ जो R है वो गैस कांस्टेंट है और ये किलो में इसकी वैल्यू 831 होती है, लेकिन यदि हम इसको चेंज करना चाहें ग्राम में तो ये 0.83 हो जाएगी। और जो टेम्परेचर है यहाँ पर 298 केल्विन ही है। और यहाँ वैलेंसी ऑफ मेटल्स, N का मतलब यहाँ वैलेंसी ऑफ मेटल्स है, और F का मतलब है फराडे नंबर, दैट इज 96500 कूलम। Next question is write the Faraday's law of electrolysis. There are two laws. First law, Faraday's first law of electrolysis. The law states that the mass of any substance deposited or liberated at any electrodes is directly proportional to the quantity of electricity passed. Thus, if W gram of substance is deposited on passing Q coulomb of electricity, then W proportional Q. If we remove proportionality sign, then we take constant, that is Z, where Q equal to IT, so the W equal to ZIT, where Z is constant of proportionality. Now Faraday's second law of electrolysis. It states that when the same quantity of electricity, again, it states that when the same quantity of electricity is passed through solutions of different electrolytes connected in series, the weight of the substance produced at the electrolytes are directly proportional to their equivalent mass. And this is written as W proportional to E, and if proportionality sign is removed, then W upon E equal to constant. Now the question is, what is rusting of iron? Described electrochemical theory of rusting. Process by which the layers of undesirable compounds are formed on the surface of metal on its exposure to atmospheric condition are called corrosion. Rusting of iron is example of corrosion. Chemically it is ferric oxide hydrate, that is Fe2O3xH2O. Electrochemical theory of rusting. Rusting process is like a cell. Let us see how it is cell. First of all, anode reaction. On one spot of iron sheet, oxidation takes place and this spot behaves as an anode. That is Fe solid form and Fe2 plus in aqueous form, and two electrons are removed from it. The electrons which are released at the spot travel through the metal and reach another spot on the metal which act as a cathode. These electrons causes the reduction of oxygen in the presence of hydrogen ion.
Hydrogen ion are formed due to decomposition of carbonic acid formed by the dissolution of CO2 in H2O. Let us see the reaction. This is H2O plus CO2 and it is carbonic acid. H2CO3 plus 2HS plus CO. This is a hydrogen ion formed in it. So cathode reaction is O2 plus 4H plus 2H2O. ओवरऑल रिएक्शन इज 2Fe। ओवरऑल रिएक्शन को हम जो है ऊपर से मिलाएंगे, एनोड को कैथोड को दोनों को लिख देंगे, जो दोनों तरफ होगा उसको नहीं लिखेंगे। इस तरह से फॉर ये जो फेरिक आयन कॉजेज द हाइड्रेशन टू फॉर्म द Fe2O3 into XH2O, it is a rust. Draw a labeled diagram of Daniell cell or electrochemical cell and explain cell reaction. Electrochemical cell क्या है? The device on which chemical energy changes into electrical energy is called electrochemical cell. These are also known as galvanic or voltaic cell. The working of these cells can be understood with the example of Daniell cell. Here is a Daniell cell. This is anode rod made of zinc and it is dipped in zinc sulfate solution. This is copper rod dipped in a copper sulfate solution, and both rods are connected with the galvanometer and a key, and this is a salt bridge connected to half cells, that is zinc cell and copper cells. Daniell cell. In this cell, zinc rod is dipped into ZnSO4 solution and copper rod in copper sulfate solution. Both solutions are connected through KCl salt bridge. When Zn and Cu electrodes are connected by wire and galvanometer, flow of electrons from zinc to copper occurs. Zinc atoms change into Zn2 plus and electrons reach at Cu electrode where Cu2 plus change into Cu metal, and this copper deposits on the electrode, and the reactions are at anode Zn converted into Zn2 plus and 2 minus. At cathode, these electrons are reached to Cu2 plus aqueous solution and this is converted in solid form which is deposited in the electrode. The complete cell reaction is, यहाँ पर हमको ZnS लिख देना है, इसको भी लिख देना है, और यहाँ पर ये Zn2 प्लस लिख देना है, CuS लिख देना है, ये कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा। यदि हम इसको सेल के फॉर्म में, इसको सिंबल के फॉर्म में डिनोट करना चाहेंगे तो ये है ZnS हो गया। ZnS को हमने किस में डिप किया है? ZnSO4 में। फिर यहाँ CuSO4 हो गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा? CuS हो जाएगा। Now another important question is, what is fuel cell? Explain its working. Galvanic cells that are designed to convert the energy of combustion energy of fuels like hydrogen, methane, methanol, etc. directly into electrical energy are called fuel cells. So in fuel cells, combustion energy is converted into electrical energy. On the most successful fuel cells uses the reaction of hydrogen with oxygen. It is shown in figure from water. The cell was used for providing electrical power in the Apollo space program. The water vapors produced during the reaction were condensed and added to the drinking water supply for the astronauts. In the cell, hydrogen and oxygen are bubbled through porous carbon electrodes into concentrated aqueous sodium hydroxide solution. Catalysts like finely divided platinum or palladium metal are incorporated into the electrodes for increasing the rate of electrode reactions. The electrode reactions are, here the reaction in cathode O2 plus 2S2O plus 4 electron, we get 4 OH minus. In anode 2S2 plus 4 OH minus, we get 4 S2O and 4 electrons. Overall reaction can be written as 2S2O plus O2 equals to 2S2O. And the diagram of fuel cell is this. Here H2 enters, O2 enters, they are the incorporated porous parts which act as a anode and cathode, and there is electrolytic solution of H2O. Now see the important numerical questions of this chapter. Calculate the potential of hydrogen electrode in contact with the solution whose pH is G10.
If pH of solution is 10, means it H plus ion concentrated is 10 to raised to power minus 10 molar solution. Using the formula for single cell of Nernst equation, that is E cell equal to standard E cell minus 0.059. This is again 0.059 upon n log 10 H plus ion. Here standard cell, the potential difference of standard cell is 0, n equal to 2, H plus or pH plus value is 10 to the power minus 2. This is value of n. If we put these values in the formula, that is इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई, इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई, n की वैल्यू यहाँ पर 2 है और ये log 10 है और 10 रेज टू पावर माइनस 10 है. यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये पावर इधर चला जाएगा, तो 10 और log 10 की वैल्यू 1 होती है और ये पावर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो माइनस 0.59 वोल्ट इस सेल का जो है पोटेंशियल आ जाएगा. इसके एक बार आप लोग पूरी तरह से सॉल्व करके देख लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.02 मोल पर लीटर कैसियल सॉल्यूशन एट 290 केल्विन इज 2.48 into 10 per minus 2 ohm inverse centimeter inverse, then calculate its molar conductance. Here the kappa is, that is specific conductance is 2.48. ये दिस वैल्यू है, ये वैल्यू हम लिख लेंगे. इसके बाद यहाँ पर जो कंसनट्रेशन दिया है यहाँ पर मोलर सॉल्यूशन का, ये कंसनट्रेशन लिख लिए. अब हम जानते हैं लेमडा इक्वल टू कप्पा इंटू वी, ये फार्मूला होता है मोलर कंडक्टेंस का. तो यहाँ पर कप्पा की जगह कप्पा लिख, लेकिन हमको यहाँ पर जो है वॉल्यूम नहीं दिया, तो वॉल्यूम को इस तरह से लिख सकते हैं 1000 अपॉन कंसनट्रेशन. अब यहाँ पर हम ये कप्पा की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वाली. इसके बाद यहाँ पर 1000 लिख दीजिए और ये सी एम की वैल्यू जो है ये पुट कर देंगे. इसको सॉल्व कर देंगे तो 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इसकी जो है मोलर कंडक्टेंस हो जाएगी. Now next question, what are weak electrolytes? Give an example. Find out molar conductivity of lithium bromide aqueous solution infinite diffusion when joint conductance of lithium ion and bromium ion are, ये वैल्यू हमको दे दिया है. और यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन पहले हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पर सीधे इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को आप ऊपर देख लेंगे और यह है लिखा है, these are the substance which dissociate only to small extent. Example CS, CH3CONH और NH4H. अब यहाँ पर हमारे पास जो है लिथियम ब्रोमाइड का है, तो हम इसको इस तरह से अकॉर्डिंग टू कलरॉस लॉ से लिख सकते हैं. यहाँ पर ये लेमडा इन्फिनिटी पर इसका जो है आयंस की कंडक्टिविटी है और ये ब्रोमीन आयन की कंडक्टिविटी है. अब हमको यहाँ पर लिथियम आयन की कंडक्टिविटी ये क्वेश्चन में दिया है और ये ब्रोमीन आयन की कंडक्टिविटी क्वेश्चन में दिया है. यदि हमको इसका निकालना है तो इस फार्मूले से हम दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी दोनों की कंडक्टिविटी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट लेमडा एम इन्फिनिटी फॉर एसिटिक एसिड फ्रॉम गिवन वैल्यू. HCl का यहाँ पर जो है मोलर कंडक्टिविटी ये दिया है डिफिनेट इनडिफिनिट कंडीशन में, और ये इन्फिनाइट डाइल्यूशन में NaCl का भी दिया है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन में इसका भी दिया है. तो सबका ये कंडक्टिविटी दिया है, हमको यहाँ पर जो है एसिटिक एसिड का निकालना है. तो सभी को हम पहले आयंस के फॉर्म में लिख सकते हैं. HCl को इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग कलरास, ये जो इनका जो कंडक्टिविटी है आयंस की कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होगा. NaCl को भी इसी तरह आयंस में लिख दिए हैं, इसको भी इसी तरह से आयंस में अलग अलग लिख दिए हैं. इतना लिखने के बाद आपको देखना है कि ये जो CH3COH है, यदि हम इसको आयंस में लिखेंगे तो हमको ऊपर से ये देखना है कि ये किस में मिलेगा और ये किस में मिलेगा, H प्लस किस में मिलेगा. तो हमको H प्लस मिल रहा है इसमें HCl में, और यहाँ पर CH3CO ये इसमें मिल रहा है. तो इन दोनों को हमको क्या करना है, ऐड कर देना है. इनकी जो कंडक्टिविटी है इनको ऐड करना है, NaCl की कंडक्टिविटी को माइनस करना है. तो इस तरह से यहाँ पर हम जो है दोनों की कंडक्टिविटी को ऐड कर रहे हैं, एक को माइनस कर रहे हैं, और जब माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिलेगी.
तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं जैसा करना हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी इसमें आयंस दिख रहे हैं उस आयंस जिसमें प्रेजेंट हो उनके कंपोनेंट्स को ऐड करना है, बाकी को माइनस करना है। जैसे यहाँ पर CH3CO चाहिए तो ये वाले में है तो इसको हम ऐड करेंगे, H+ चाहिए तो इस वाले में है, इसको ऐड करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, जो बचा है उसको माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन फॉर NaCl, HCl एंड NaCr ये वैल्यू दिया है मोलर कंसंट्रेशन की तीनों को, और यहाँ पर हमको ये जो है HAC का मोलर कंसंट्रेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यदि हमारे पास ये है तो इसको हम दो तरह से इसको लिख सकते हैं। अब इसमें भी हम देखेंगे कि किसको ऐड करेंगे, किसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे Na इसमें है तो Na वाले को हम क्या कर देंगे, HCl के साथ ऐड कर देंगे, तो इस तरह से। और यहाँ पर जो है NaCl की वैल्यू को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमको यहाँ पर जो जो ज़रूरत है, हमको इसकी ज़रूरत है ये इसको, तो हम इसको क्या करेंगे ऐड और इसको क्या करेंगे माइनस, तो इस तरह से इनकी वैल्यू माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको देख लीजिएगा, कैलकुलेट करके देखिएगा। थैंक यू।